Okay, good morning, everyone. So you have seen that in the last class, we have discussed about the data mining as a KDD process and the different steps involved there. Okay, then we have discussed about that classification and prediction, and you see that what is actually classification is and what is prediction. With some examples, we try to understand this. We have already tried to understand these two terms in depth, and you got to know that whenever there is classification, then what happens at some levels, or we can say class levels are associated, while in the case of prediction, what we have some numerical values. Okay, so that's it. Now, how does classification works? क्लासिफिकेशन जो है कैसे काम करता है, ठीक है? The classification process, it includes two steps. It includes two steps means how you go for classifying some data sets. Okay, इसको करने के लिए आपके पास क्या है? जो process है उसमें two steps हैं. First, what you will do, you will go for building a classifier, or you can say that model. Then second is that using that classifier, you go for classification. Okay, repeating again. First step is the building of the classifier, or you can say the development of that classifier model. And the second is that you will use that classifier to classify that data set, right? Now, as a first step is what? Our first step, কি আছিলে? Our first step to আছিলে to build the classifier or model. ठीक है? तो इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? लर्निंग स्टेप्स और द लर्निंग फेज. This phase is also known as learning step or the learning phase. And in this step, the classification algorithm, ठीक है, आप लोगों को बहुत सारे क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स मिलेंगे, उसमें से कोई भी एक यूज करके आप क्या करोगे, ये जो फेज है इसमें काम करोगे. So in this step, you will use that classification algorithm to build a required classifier. Then the classifier is built from the training set made up of the database tuples and the associated class labels. याद रखना, जो क्लासिफायर हम बिल्ड कर रहे हैं ना, वो किस डेटा, देखो ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि फ्रॉम व्हिच डेटा सेट or from which part of the data set we go for building the classifier? The answer will be the training set. Okay. Now, each tuple that constitutes the training set is referred to as a category or class. Okay. And I know that you all are aware with the term tuple that we have got in our DBMS class. DBMS class में हमने tuple word देखा था, मिला था, ठीक है? तो ट्रिपल वर्ड का मीनिंग्स क्या था? एक पार्टिकुलर रिकॉर्ड, हम जब टेबल यूज करते थे, देन वी यूज टू रेफर वन पार्टिकुलर रो बाय टपल. ओके, टुपल, सॉरी. तो टुपल जो है, इसमें इस ट्रेनिंग सेट में जो टुपल्स है उसको हम बोलेंगे एक पार्टिकुलर क्लास और एक पार्टिकुलर कैटेगरी. So why these things are important? Because the MCQs may be arising from this type of statements. Now, these tuples can also be referred as sample, object, or data points. Now, look at this figure. In this figure, you will see that training data set. कुछ training data है. Name, age, income, loan decision. Can anybody of you tell me that what does it actually, this name, age, income, and loan decision signifies in that training data set? কোনোবাই মোক ক'ব পাৰিবা যে এই যে নেম, এজ, ইনকাম, লোন ডিচিশনছ এইবিলাক কি হয় ট্ৰেইনিং ডাটা সেটটোৰ কাৰণে? Okay, these things, ये जो है name, age, income, loan decision, these are known as attributes. Okay, these are known as the attributes, or you can say the properties of that data set. Well, now ट्रेनिंग डेटा सेट में हमें ये पार्टिकुलर जो है, इस पार्टिकुलर टेबल में हमें दिखाई दे रहा है कि नेम है, एज है, इनकम, लोन डिसीजन. अब नेम में कुछ नेम्स है, एज में यंग, मिडिल एज, सीनियर, ये डिफरेंट टाइप्स का लेवल है.
Then income में either low, high, okay. Loan decision, risky, low, safe, okay. Then जो क्लासिफाई किया है हमने उसका आउटपुट क्या होगा, आइदर रिस्की और सेफ। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने एक एग्जांपल दिया था, आप लोगों को याद होगा कि as a loan manager or loan officer, you need to find out that what actually that loan decision will be resulting in near future. Means will it be risky or will it be safe? So ये जो डेटा है इससे हम क्या करेंगे, we'll try to find it out. Now ट्रेनिंग डेटा मतलब ये हो गया, आपको दिखाई दे रहा है ये सारी चीज, ठीक है। अब ये ट्रेनिंग डेटा के ऊपर हमने क्या अप्लाई किया, we have applied classification algorithm. Now, when we apply the classification algorithm, we'll get some classification rules. Okay, and from that classification rules, like suppose, just for an example, we should not take it personally. Suppose if age is yacht, then loan decision is risky. Why? You can understand, you can analyze that. Suppose कोई बहुत ज़्यादा ये है, young है, and वो बहुत सारे लोन ले लिया, maybe it may be result in risky decision. Okay, it may not be true for all, but when you evaluate the past records, and you may find it. So that's why this rule being derived with the help of the classification algorithm. Okay, I hope it is clear to you. Now, we use this classifier for classification. The test data is used now to estimate the accuracy of the classification rules. अब जो हमने classification rules derive किया था with the help of the classification algorithm, ठीक है, और वो rules कहाँ से मतलब derive किया था? This question may also come. From which part of data do we have derived the classification rules? Can you answer me quickly? Okay, so no answer. So just to remind you that that was training data. Okay, that was the training data from where we have derived the classification rule. Now the next thing is that when you have some classification rule, मैंने अभी आप लोगों को बोला कि एज यंग है तो लोन डिसीजन रिस्की है, ठीक है। Now ये कितना ट्रू है, इतना कितना एक्यूरेट है, how much accurate this classification rule is, we have to derive that also. Okay, we have to find it out also. So for that, we use test data. Okay, we use test data to estimate the accuracy of the classification rules that been derived with the help of training data with some classification algorithm. Now, these classification rules will be applied to new data tuples if the accuracy is considered acceptable. अब जो हमें ये हाँ accuracy मिला, accuracy आप लोग जब प्रोजेक्ट करोगे तब आपको समझ, किसी ने शायद मशीन लर्निंग बेस्ड प्रोजेक्ट लिया होगा, आई होप सो। तो आपको एक्यूरेसी वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। आप देखोगे कि 80%, अब अराउंड 80% जब मिल रहा है आपको एक्यूरेसी, यू कैन कंसीडर दैट दैट इज ओके। हाँ, इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑल्सो, बट मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेडिकल डायग्नोसिस प्रोसेस में 80% करेक्ट होना ही मतलब बहुत ज्यादा एक्यूरेट होना। Actually, it depends on our application, on our requirement. ठीक है, आ रहे ना समझ में? अरे अकमान रेस्पॉन्स तो দিব পাৰা কম সে কম, हाँ বুঝি পাই আছা না? ওকে, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। কোনে ৰিপ্লাই দিলা এতিয়া? अमलान सर। अरे थैंक यू अमलान। ओके, सो ये जो 80% एक्यूरेशन टू पाई सर, ये जो एक्यूरेसी आपको मिल रहा है 80%, ये रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग होगा, ठीक है। जैसे मैंने कुछ रिसर्च का काम किया था ब्रेन ट्यूमर डिटेक्शन के ऊपर, ठीक है। तो ब्रेन ट्यूमर डिटेक्शन के ऊपर मैं नहीं बोल सकता हूँ कि 80% एक्यूरेसी इज द एक्सेप्टेबल वन, ठीक है। But in normal cases, in certain cases, or in, you can say in more than average cases, when you find that 80% accuracy you have received, then you can come to the conclusion that yeah, your classifier model is okay. We can go for
testing it, or we can go for applying it to some new data set. Right? Remember it, don't forget it. In your project time, we might recall this statement that I have told to you right now. Okay. So that's it, how we have classified the data, what are the steps involved in it. Okay, so इसका diagrammatic view भी आप लोग देख लीजिए. Test data similarly दिख रहा है. Obviously, that same data sets we have divided into two parts: training data and test data, right? हमने कोई अलग से attributes वाला data नहीं लिया है. We have considered the same data set, but we have divided it into two parts. Remember, training data set where we are using maximum portion of the data, and then testing data, remaining left portion of the data. Now, testing data classification rules, then test data. So if its accuracy is good, then we go for applying those classifying rules for some new data points. So अभी जो हमने डिस्कस किया इसमें आपको समझ में आ गया कि जो क्लासिफिकेशन प्रोसेस है, you have seen two steps involved here. तो पहला जो स्टेप्स था, जो ट्रेनिंग से हम कुछ ट्रेन करा रहा है, किसको ट्रेन करा रहा था? हमारा जो क्लासिफायर मॉडल को ट्रेन कर रहा था. ठीक है, वी ट्राई टू ट्रेन द मॉडल, क्लासिफायर मॉडल. ओके, वो क्लासिफायर मॉडल में क्या था? सम क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम. ढेर सारे क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स है, you know that. Okay, even starting from neural network, KNN, okay, and then nearest neighbors, a lot of classification algorithms are there. Requirements के अनुसार आप लोग क्या कर सकते हो, कोई भी एक यूज कर सकते हो. अब जब आपने क्लासिफायर मॉडल बना लिया, तो ये जो स्टेज था, जब आप ट्रेन कर रहे थे आप क्लासिफायर मॉडल को, इसको बोलते हैं हम लर्निंग स्टेप. मशीन लर्निंग, रिमेंबर, मशीन लर्निंग का जो मशीन लर्निंग, ये जो लर्निंग स्टेज है, ये कहाँ होता है आपका? एग्जैक्टली ट्रेनिंग फेज में. Right. The construction of classification algorithm, different algorithms are used to build a classifier by making the model learn using the training set available. Model has to be trained for prediction of accurate results. I think no more explanation needed. You got it exactly. Then classification state, model is to predict class levels, testing the constructed model on the test data, and hence estimate the accuracy of the classification rules. राइट. आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि ये जो सर बोल रहा है ट्रेनिंग डाटा, टेस्टिंग डाटा, सॉरी, व्हाट इज दैट एग्जैक्टली? सो मैंने जैसे बोला आप लोगों कि ट्रेनिंग डाटा एंड टेस्टिंग डाटा इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ द सेम डाटा सेट, राइट? So let's try to understand this with the help of an example. Suppose there is a person who is sitting under a fan, then the fan starts falling on him. He should get aside in order not to get hurt. So this is the training part to move away. ठीक है? While testing, if the person sees any heavy object coming towards him or falling on him and moves aside, then the system is tested positively. If the person do not move aside, then the system is negatively tested. Same is the case of with the test with the data. It should be trained in order to get the accurate and best result. ठीक है? तो क्या एग्जाम्पल था कि कोई भी एक पर्सन, जैसे आप हो सकते, एक फैन के नीचे आप बैठे हो, जब अगर वो फैन जस्ट आपके सिर के ऊपर गिर रहा है, तो आप अगर हट जाओगे उस जगह से, तो क्या होगा? आपके सिर के ऊपर वो नहीं गिरेगा, तो आप हर्ट नहीं होंगे, राइट? तो ये जो आपने किया बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग पार्ट. आपको पता नहीं है कि फ्रॉम योर व्हाट आई कैन से फ्रॉम योर चाइल्डहुड यू आर लर्निंग सम थिंग्स, but you have ignored that actually, but indirectly you are learning something from the environment. Your mom and dad are teaching you something, and your friends. So from those things you have learned something, you have been trained something, and because of the training you have moved aside. Okay, when some heavy objects are coming towards you, that is the training part. Now testing means, suppose
अभी तो क्या किसके बारे में हम बात कर रहे थे, फैन के बारे में बात कर रहे थे। फैन जब सिर के ऊपर गिर रहा था, आप हट गए तो हार्ट नहीं हुए, तो ये ट्रेनिंग फेज था। आप उसी टाइप का कोई नया डेटा ले लो। नया डेटा मतलब क्या है, सपोज एक ट्रक आ रहे हैं आपके सामने, ठीक है, और आप रास्ते में खड़े हो, रास्तों के बीचों बीच हो, और फिर भी आप नहीं हट रहे हो सपोज, तो क्या हो जाएगा, यू विल बी हार्ट, गॉट इनटू दैट एक्सीडेंट, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो टेस्टिंग प्रोसेस है वो फेल हो गया। मतलब आपने जो क्लासिफिकेशन रूल्स निकाला था कि कुछ हैवी ऑब्जेक्ट्स आपके पास आएंगे तो आप हट जाओगे, पर आपने जब नया डेटा के साथ ये चीज ट्राई किया तो आप वो नहीं कर पाया, और एग्जैक्टली आप फेल हो गए। तो आप फेल हो गए मीन्स व्हाट, द टेस्टिंग process has been failed. That is the example by which we try to understand the meaning of training and testing, and same is the case with data. Okay, so I hope this is sufficient for today. What we have learned today is very important, and from the next class, we'll continue with the training and testing and with some more examples. Thank you.